during the budget session, there was a huge, what you can call, uproar. The budget session was a very disruptive session of the House this time. Okay, so the government and the opposition were having a kind of a tough time talking to each other and letting the House function as one entity. Now, what was happening in the Rajya Sabha was that the ministers, I'll just refer to an article to you within the parliament part. If you take a look at Article 88 of the Constitution, just as a revision, because we are now revising some of the important aspects of Constitution, and I hope that this kind of a thing makes, I'm sure all of you know all of these things, but while we are doing it together, it is consolidating back again. Okay, so when we take a look at Article 88 of the Constitution, under Article 88 of the Constitution, we identify that let me just give you a better sense of making an answer of a question from this particular perspective. Okay, now let's say sometimes you see that a member of parliament from Lok Sabha is the finance minister. You know, of course, that to become a minister in the union or the state cabinet, you have to be a member of the parliament or the state legislative assembly or council, right? Now, the point about what you can call the member of parliament being a minister, let's say for example you have the home minister who is a member of parliament from Lok Sabha. But as we see that the parliamentary democracy works, that both Rajya Sabha and Lok Sabha are equal in footing, and both of them can assert an accountability from the government or the ministers regarding their actions, right? Now, sometimes we observe that the minister who is a member of parliament from Lok Sabha is also addressing the Rajya Sabha. How does he get the powers to do so? Okay, if he is not a member of Rajya Sabha, sometimes you see Prime Minister in the Lok Sabha, sometimes you see him in the Rajya Sabha. Okay, he gets his powers to address any house in the parliament from Article 88 of the Constitution. Take a look at this. Article 88 of the Constitution. Rights of ministers and attorney general as respects houses. Okay, take a look at this. Every minister and the attorney general of India shall have the right to speak in and otherwise to take part in the proceedings of either house, any joint sitting, and any committee of parliament of which he may be named a member. But he shall not have the right to vote by the virtue of Article 88. Right? तो अगर मतलब मान लीजिए आपसे प्रश्न पूछा जाए कि does the constitution provide that any person who is a member of parliament from one particular house can only address that particular house, this statement is correct or incorrect? This statement is incorrect, because Article 88 says that a minister and an attorney general can be present in either house of the parliament to speak, even if he is not a member of that house of parliament. Attorney general is not a member of any house of parliament. But when he is speaking in such a house, he cannot exercise the right to vote. He can only exercise the right to vote as a member of parliament within the house from which he is, in the house in which he is elected by the people, either Rajya Sabha or the Lok Sabha. So, you can just make sure that if the UPSC creates a kind of a creativity out of this question somewhere or the other, you're able to deal with that without facing too many difficulties. Okay? Make sense? Take. Now, in addition to this, what was happening was that the Prime Minister and some other ministers were addressing the Rajya Sabha under Article 88 of the Constitution, and some of the members of the Rajya Sabha sitting towards the other benches, they were constantly uproaring in a way, entering the well, creating a bit of a mood, and etc. etc. These are the normal things which happen inside a democratic forum. Now, the Rajya Sabha chairman, who is a vice president, you know the vice president is the ex officio chairman of the Rajya Sabha,
he took notice of this kind of a thing which was being done by the member of parliaments. Now the Rajya Sabha chairman issues what is known as a breach of privilege motion to these member of parliaments. It's a very interesting case story, which is a current affair that is developing, which I wanted to draw your attention towards, which is the reason why you can have a question from the breach of privilege motion. I'm sure by now you understand what is the nature of a breach of privilege motion. Okay, so what he says is that because of the constant disruption of these what you can call member of parliaments of the Rajya Sabha, this member of parliament who is a minister is not able to exercise his right to freedom of speech under Article 105 Clause 1. And on account of this, he takes a suo motu cognizance. I hope you understand the meaning of suo motu. He takes a suo motu cognizance. Suo motu का मतलब होता है on its own accord, on his own accord. So what he does is he takes a suo motu cognizance of the fact, matlab without anyone having complained to him, he takes the matter up by his own volition, and he refers this complaint to the Rajya Sabha departmentally related standing committee on privileges to investigate and prescribe a proper punishment to the member of parliament who have been disrupting the house and not letting other member of parliament speak. Okay, and this is why this kind of a thing has become relevant in the current affairs. Now, an interesting constitutional question which is arising out of this is basically the point that can the member of parliament be charged for breaching the privilege of another member of parliament, and if the member of parliament is being asked not to talk by issuing a breach of privilege motion, is that itself not a breach of privilege of that member of parliament? This is a constitutional question that is being asked in the newspapers. Now, currently the parliamentary committee is taking a consideration of it and the answers are not coming out correctly, but nonetheless, you have the ability to understand the way in which parliamentary privileges work. Parliamentary privileges, for example, a question comes. Breach of parliamentary privileges motion can only be applied against people who are outside the parliament, who are non-parliamentarians. Is this statement correct or incorrect? It's a typical UPSC kind of a question. UPSC always plays upon these facts from current affairs. The question that the UPSC will state in a sentence somewhere would be, can breach of privilege motion under the provisions of Article 105 be made only against non-member of parliaments or non-members of the house from which the breach of privilege motion arises? Is this statement correct or incorrect? And as we have seen it in the case of the 12 MPs from the Rajya Sabha having been served the breach of privilege motion, it is obviously clear that a breach of privilege motion can arise against the members of a house also from which it is originating. Clear? Okay? You get the point? Let me see if I can pull out a news article to get you a sense of it. This is a news article that I developed February 20, 2023, fresh of the current affairs, ready recipe for the prelims examination. Take a look at this. Rajya Sabha chairman asks privilege panel to investigate disorderly conduct of 12 opposition MPs. Okay. This is the Vice President of India, Jagdeep Dhankar, who is also the chairman of the Rajya Sabha. Take a look at this article to get a sense of it and also the question that can come out of it.
Out of the 12 MPs, 9 MPs were from the Congress party and 3 MPs were from the Aam Aadmi party. Right, so you see, this is what was made was the point. In violation of the rules and etiquette of the Rajya Sabha, by repeatedly entering the well of the council meaning Council of States, shouting slogan, persistently and willfully obstructing the proceedings of the council, compelling the chair to repeatedly adjourn the sitting. Right? Shraddha has an interesting question. What can be a valid alternate punishment for constant hecklers then? The Speaker has been empowered by the rules of the Parliament, Lok Sabha and the Rajya Sabha, both to take actions against the, what you can call, the people who disrupt the parliamentary proceedings. But all said and done, the Speaker has to use these powers very judiciously, because as you can see, Parliament is a ground of free exchange of ideas and debate. It's supposed to be a little chaotic. But nonetheless, the powers to take disciplinary actions are there with the Speaker in cases of heckling, etc., etc. This is one of the courses by which discipline can be handed down, and there are other simpler powers which are not given in the Constitution but given in the rules and procedures of the Lok Sabha and the Rajya Sabha, which empower the Speaker to take actions against the what you can call non-compliant member of parliaments. Has any disciplinary action been taken yet, Sayan? No, not yet. This is still under consideration of the standing committee. The standing committee is currently under the consideration of the nature, but in some time you will see the matter develop, and as you see the matter develop, you can update yourself from the newspaper articles itself. Okay? Clear. So this is one thing about the parliamentary privileges which I wanted to cover. Take. Now, let's move on. Let me just give you a brief gist of the articles that I have covered of the Constitution and to get a sense of what I am trying to say. We have Article 105 of the Constitution, which talks about parliamentary privileges. Along with this, I have discussed Article 88 of the Constitution, which allows for a minister of one house who is a member of that house to go into another house and speak out. And the parliamentary privileges will apply to him not only in his own house, but also into another house, and even from the members of parliament. So this ये prelims का question बन सकता है कि अगर एक किसी व्यक्ति की parliamentary privilege breach करी जा रही है, it be only applicable by the actions of people outside the parliament, but also by the application of people inside the parliament. And the correct answer, as you can see in the recent case of the Rajya Sabha, it's coming out very clearly in front of our eyes that even member of parliament can be disciplined by the use of the parliamentary privileges given under Article 105 of the Constitution. Let's take a look at Article 105 of the Constitution directly. Take a look at this. Article 105 Clause 1. Subject to the provisions of this Constitution and to the rules and standing orders regulating the procedure of Parliament, there shall be freedom of speech in Parliament. Okay? So, subject to the rules made by the House. The House can make its own rules to say, for example, there is something called a parliamentary language, that there are terms which you cannot use in the Parliament. So, Parliament has the ability to make the rules for its own regulation inside the House कि कौन सी भाषा बोली जाएगी, कौन सी भाषा नहीं बोली जाएगी. उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, उस चीज़ को ऑब्लाइज करते हुए पार्लियामेंट में हर व्यक्ति के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच रहती है. ठीक है. No member of parliament shall be liable to any proceedings in any court. No member of parliament shall be liable to any proceedings in any court in respect of anything said or any vote given by him in parliament or any committee thereof. And no person shall be so liable in respect of the publication by or under the authority of either house of parliament of any report, paper, votes or proceedings. तो अगर पार्लियामेंट में कोई व्यक्ति कुछ बोलता है, कुछ छापता है, कुछ सर्कुलेट करता है और अगर किसी प्रकार का वोट देता है, तो उसके बेसिस पे कोई भी क्वेश्चन ऊपर नीचे हो, वो किसी भी अदालत के सामने पेश नहीं किया जाएगा, which basically means that he cannot be subject to any law of the land and will be given a immunity from that kind of a prosecution. As again, I'll repeat it out. If Rahul Gandhi had done what he had done inside the parliament,
he would not have been subjected to the case of defamation under section 499 because he would have been covered under the clauses of parliamentary privileges. Okay, ठीक है. So with this regard, I've also covered with you the nature of parliamentary privileges. Don't forget the 40 days wala clause over here. And also with this edition, I have covered what is known as the, what you can say, a breach of privilege motion and the points which are associated with it. Breach of privilege motion. इसके कुछ आर्टिकल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा क्लास के बाद या कल तक. ठीक? This is some material that you can read in addition to these things. ठीक? Now we come to the next important current affair which is developing, which is with regard to the officers of the parliament. ठीक है. तो जनरली जब हम पार्लियामेंट की बात करते हैं तो उसमें पार्लियामेंट के चैप्टर में एक चैप्टर होता है पार्लियामेंट के अंदर, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसको हम कहते हैं ऑफिसर्स ऑफ द पार्लियामेंट. ठीक है. Officers of the Parliament. Now, in Officers of the Parliament, basically we include three parts. One is the chairman and the deputy chairman of the Rajya Sabha. इसमें ना बहुत महीन questions निकल आते हैं prelims के. तो we'll go through this part a little bit, what you can call, delicately, so that you have the ability to make sure that you are in tune with the possible trapped question that can be asked from this part. तो थोड़ा ध्यान से इसको हम कवर करते हुए चलेंगे, क्योंकि इन चीज़ों से ना छोटे छोटे आर्टिकल से कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस बना के घुमा के दिए जाते हैं, थोड़े सी फिरकी मार के. ठीक है. तो चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा. ठीक है. एंड सेकेंड यू हैव कॉरेस्पॉन्डिंगली द स्पीकर and deputy speaker of the House of the People. And you have what is known as the Lok Sabha प्लस राज्यसभा सेक्रेटेरिएट. इसको हम दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय कहते हैं. ओके. नाउ दिस इज बेसिकली व्हाट इज कवर्ड अंडर द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज नोन एज ऑफिसर्स ऑफ द पार्लियामेंट और ऑफिसेज ऑफ द पार्लियामेंट. ओके. नाउ तो अभी हम लोकसभा राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को थोड़ा अलग से कर लेंगे, लेकिन हम अब एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की लिस्ट ले लेते हैं. ठीक है. जो आपके प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं हाउस के, और सिर्फ पार्लियामेंट के ही क्यों, वी विल टेक अ लिस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑल्सो. राइट. तो पहला हम इसके बारे में समझते हैं, चेयरमैन के बारे में. जो राज्यसभा का चेयरमैन होता है उसके बारे में क्वेश्चंस घुमा के दिए जाते हैं कभी कभी प्रीलिम्स में. लेट्स से फॉर एग्जांपल, now please take a look at what I'm trying to say and try to learn it alongside with the classroom. Okay. When we talk about the chairman of the Rajya Sabha, it's a very distinct entity from all the presiding officers. All the presiding officers, प्रिसाइडिंग ऑफिसर मतलब किसी सदन का कोई जो प्रेसिडेंट होता है, मतलब जो चेयर होती है प्रेसिडेंट की. ठीक है. इसको स्पीकर कहते हैं हम लोकसभा में, और चेयरमैन कहते हैं राज्यसभा में, और डेप्यूटी चेयरमैन और डेप्यूटी स्पीकर, और फिर स्पीकर आपका लेजिस्लेटिव असेंबली में और डेप्यूटी स्पीकर आपका लेजिस्लेटिव असेंबली. इनको सबको प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द हाउस कहते हैं. अब इसमें से प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होता है चेयरमैन, वो थोड़ा विशेष होता है. विशेष मतलब और किसी चीज़ में विशेष नहीं होता, लेकिन उस पर क्वेश्चंस विशेष आ सकते हैं क्योंकि उसकी थोड़ी क्वालिटी अलग होती है.
He is the only presiding officer who is not elected from the house. Okay, because he is the vice president of India. तो ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ सकता है. इनफैक्ट कुछ पहले के टाइम में प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता था थोड़ा घुमावदार कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स इज नॉट अ मेंबर ऑफ द हाउस विच ही इज प्रिसाइडिंग. अब आप देखिए, लोकसभा का स्पीकर होता है वो भी हाउस के अंदर से ही इलेक्ट होता है, राज्यसभा का स्पीकर होता है वो भी हाउस के अंदर से इलेक्ट होता है, लेकिन जो राष्ट्रपति होता है या उपराष्ट्रपति होता है वो हाउस के अंदर से इलेक्ट नहीं होता है, वो होता है इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा इलेक्ट. है ना, यू गेट द पॉइंट. तो ये एक छोटी सी चीज है कि बिकॉज ही द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा इज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा इन द कैपेसिटी ऑफ एक्स ऑफिशियो. एक्स ऑफिशियो मतलब कि अगर आपने एक पोस्ट मिली है आपको तो उसी पोस्ट की वर्च्यू से आपको कोई और पोस्ट मिल जाती है. जैसे फॉर एग्जांपल कि द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज ऑल्सो द चांसलर ऑफ अ यूनिवर्सिटी. तो जो इस प्रदेश का राज्यपाल होगा वो ही इस यूनिवर्सिटी का चांसलर होगा. इसको एक्स ऑफिशियो कहते हैं, है ना. तो इस पोजीशन में अगर कोई व्यक्ति चेयरमैन है राज्यसभा का तो वो इसीलिए क्योंकि वो प्रेसिडेंट है. तो ही इज नंबर 1 not elected by the house in which he is presiding. This is number 1. ठीक है. Number 2 is, अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी जो हम जगदीप धनखड़ की बात कर रहे थे, he has been elected the chairman of और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओनली रिसेंटली इन योर एग्जाम ईयर. मतलब वो आपका करंट अफेयर का पार्ट बनता है, तो इसीलिए हम थोड़ा सा चेयरमैन के बारे में पढ़ सकते हैं क्योंकि करंट अफेयर में अभी ही उनका इलेक्शन हुआ है. ठीक है. नॉट इलेक्टेड बाय द हाउस इन विच ही इज प्रिसाइडिंग. ही इज द ओनली वन, अदरवाइज ऑल दिस प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स आर देयर. तो इसका घुमा फिरा के क्वेश्चन बन सकता है. ठीक है. एंड द सेकेंड थिंग इज दैट ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ द हाउस. which he is presiding. He is not a member of the house which he is presiding. ठीक. This one thing about the chairman. उसके बाद हम आ जाते हैं दूसरी चीज पे जिसको कहते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स इन जनरल. ठीक है. जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स अपार्ट फ्रॉम चेयरमैन होते हैं, इनके बारे में कुछ कुछ कॉमनैलिटीज हैं जो हम साथ में कवर कर सकते हैं. ठीक है. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक जो कॉमनैलिटी है प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, मैं लिख देता हूँ प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कौन से हैं. डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स. ठीक है. स्पीकर ऑफ द लोकसभा, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, देन यू हैव स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली and deputy speaker of the legislative assembly. ठीक है. ये आपके हो गए विधानसभा. ये हो गया लोकसभा. राज्यसभा. Okay. Now, to make a point about it over here, it means that the deputy chairman, speaker, deputy speaker and speaker, deputy speaker of Lok Sabha have one kind of a thing in common. ठीक है. इनके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन ने कॉमनैलिटी रखी है एक चीज में, वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट the house to which they belong, respectively, shall choose one of its members ठीक है. उसके बाद शब्दावली है as soon as may be.
as 1, 2, 3, 4 and 5। ठीक है, मैं इसीलिए बता रहा हूँ आपको कि करंट अफेयर में है ये इशू। अभी कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट के पास एक PIL फाइल करी गई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के सामने इस मैटर रखा गया है कि लोकसभा का डेप्यूटी स्पीकर एब्सेंट है और 5 राज्यों का डेप्यूटी स्पीकर एब्सेंट है, मतलब इन राज्यों में और लोकसभा के अंदर डेप्यूटी स्पीकर मौजूद ही नहीं है। इसी चीज़ पे पिछली बार UPSC के मेंस एग्जामिनेशन में प्रश्न भी आया था, द इलेक्शन प्रोसीजर ऑफ द डेप्यूटी स्पीकर। दिस इज अ मैटर विच इज इन करंट रेलेवेंस। That is why I am trying to give you the background about what is happening in this particular area. Okay. Now, एक हमारा जो सबसे पहला प्रश्न आता है वो ये है कि if you talk about the chairman, speaker, deputy speaker, Lok Sabha, speaker, deputy speaker, Vidhan Sabha, the constitution does not give 2 things. Okay? Constitution 2 चीज़ों के बारे में कुछ नहीं बोलती है। पहला तो मेथड क्या होता है इन लोगों के चूज करने का। देखिए, जहाँ भी संविधान कुछ लिखता है अपने अंदर, वो उसका मेथड दे देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, द प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज, the member of parliament shall be elected by the electoral college, the comptroller or attorney general shall be appointed by the president. Okay, the election commission of India shall be appointed by the president, the chairman of the national commission for scheduled caste shall be appointed by the president. तो संविधान लिख देता है कि elected है, appointed है या nominated है। if a person has, मतलब निर्वाचन से आया है, नामांकन से आया या नियुक्ति से आया, लिख देता है। लेकिन स्पीकर एक अकेला पोजीशन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिसमें से ना तो निर्वाचन लिखा है, ना ही इलेक्शन लिखा हुआ है संविधान में, ना ही अपॉइंटमेंट लिखा हुआ है, ना ही लिखा है नॉमिनेशन। व्हाट इज रिटन इज चूज, दैट्स इट। इसका मतलब है कि द पार्लियामेंट इज लेफ्ट टू डिसाइड अपॉन द मेथड बाय विच अ स्पीकर कैन बी चोजन। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से the parliament can decide all of a sudden that the eldest member of the house will be the speaker, and that is as good a criteria to appoint or fulfill the position of the speaker. You see the point? The question, if it comes, that does the constitution provide the method by which the speaker's position has to be filled? The answer is no. Okay, what the constitution says is that the house shall, as soon as may be, choose one of its members as a speaker. ठीक है, एक बार देख लेते हैं आर्टिकल को इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली, जिससे आपको बात समझ में आ जाएगी, जिससे कि क्वेश्चंस को आप डील कर पाएंगे आराम से। जैसे हम आर्टिकल 93 पे जाते हैं, स्पीकर की बात करता है। ठीक है, इस आर्टिकल को आप ढंग से पढ़िए और इससे जो घुमावदार प्रश्न आएंगे आप उनको उत्तर देने में थोड़ा सक्षम अपने आप को महसूस करेंगे, अगर इसको समझ लिया थोड़ा सा। ठीक है, ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से द हाउस ऑफ द पीपल शैल एज सून एज मे बी चूज। ठीक है, अब चूज का मतलब होता है कि पार्लियामेंट के पास संविधान ने पावर दे दी है कि वो कैसे डिसाइड करेगा उसका स्पीकर कैसे आएगा। या तो पार्लियामेंट इलेक्शन करा सकता है, या तो पार्लियामेंट जिसके हाथ में पॉलिटिकल पार्टी के, वो अपने मन से अपॉइंटमेंट कर सकती है उसका, और या फिर वो नॉमिनेट हो सकता है, या फिर कोई एक क्राइटेरिया लगा दिया जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्पीकर इज गोइंग टू बी द एल्डेस्ट मेंबर, और लेट्स द एल्डेस्ट the eldest member of the what you can call the eldest woman member of the Lok Sabha will be decided as the speaker. ये भी एक क्राइटेरिया लगा सकता है पार्लियामेंट के पास पूरी छूट है। तो अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट आता है that the constitution provides the method by which
the speaker's position is fulfilled, the deputy speaker's position is fulfilled, the deputy chairman's position is fulfilled, the speaker and deputy speaker positions at the legislative assembly is fulfilled, the answer is incorrect. This decision has been given by the constitution to the house in which the presiding officer has to be taken out. Okay? Clear? Now, second thing. The question is, does the constitution provide the time within which the speaker has to be appointed? ठीक है? क्या संविधान के अंदर स्पीकर को नियुक्त करने का कोई समय दे रखा है? Now, the answer to that question is no. What has been given in the constitution is the phrase as soon as he may be. मतलब जल्द से जल्द, जब वो चाहे, जितना, मतलब अगर the president, the house of the people, मतलब the house shall, as soon as may be, मतलब जितना जल्दी उनसे हो सकेगा उतना जल्दी वो स्पीकर को चूज कर लेंगे. लेकिन the time limit which is there supposed to be for the speaker has not been given by the parliament. Again, neither a time limit has been given for the speaker, nor the deputy speaker, nor the deputy chairman, nor the deputy speaker and speaker of the Vidhan Sabha. इन लोगों के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं दी. ये भी पार्लियामेंट अपने आप खुद, या फिर जिस सदन का प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो अपने आप खुद डिसाइड करेगा इस चीज़ का. द डिसीजन ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग हैज़ टू बी टेकन बाय द गवर्नमेंट, बाय द पार्लियामेंट इटसेल्फ. ठीक है. Now this is where we become a question of relevance. In the parliament, the Parliament of India, for example, has decided through the rules of procedure, जो पार्लियामेंट ने अपने आप को गवर्न करने के लिए जो प्रोसीजर बनाए हैं, the parliament has decided through the rules of procedure. Parliament has decided through the rules of procedure that the speaker shall be chosen by elections. Okay? The speaker shall be chosen by elections. Now, just pay attention to this. The date of the election of the speaker shall be prescribed. इसको नोट करके लिख लीजिए, इस पे MCQ आएगा. By the president. Okay? The date of the election of the speaker shall be prescribed by the president. क्योंकि कोई डेट का प्रावधान उसमें नहीं दे रखा है संविधान में, इसलिए प्रेसिडेंट के पास पावर है कि स्पीकर के इलेक्शंस कौन से दिन में होंगे उस दिन को अलॉट करना. वेरी गुड संदीप. ठीक है, अभी आपका एक MCQ बन जाएगा इस चीज़ पे बहुत आसानी से. अब इसके आगे बढ़ के क्या है, द डेट ऑफ द इलेक्शन ऑफ द डेप्यूटी स्पीकर. The date of the election of the deputy speaker of the Lok Sabha shall be prescribed by the speaker. कौन से दिन चुनाव होगा डेप्यूटी स्पीकर का भी जो फिलिंग ऑफ द पोस्ट है वो चुनाव के माध्यम से होती है. ठीक है, अब इसको आप अंडरलाइन करके याद कर लीजिए. इस पर एक बहुत इजी MCQ बन सकता है, क्योंकि लोकसभा में अभी तक डेप्यूटी स्पीकर के चुनाव नहीं हुए. 2019 के इलेक्शंस हुए थे लोकसभा में. द पार्टी केम इनटू पावर इन लोकसभा इन 2019, राइट? एंड सिंस 2019 till 2023, it's almost the completion of the term of the Lok Sabha, the deputy speaker elections have not been notified by the speaker, and therefore it becomes relevant to understand what authority is in charge of notifying the election date of the deputy speaker. The answer is the speaker. What authority is in charge of notifying the date of the election of the speaker? The answer is the president.
Analogously, what authority is responsible for describing the date of the election of a speaker of the Vidhan Sabha? The answer is the governor. And what authority is in charge of appointing the date of election of a deputy speaker? The answer is the speaker of the Vidhan Sabha. Right? This kind of a analogy makes a clear repetition in these cases. Clear? तो अब जो हमारे सामने करंट अफेयर है वो ये है. मैं आपको दोबारा से इसमें जो पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन है वो याद कराने की कोशिश करता हूं कि जो लोकसभा है या राज्यसभा का डेप्यूटी चेयरमैन, लोकसभा का स्पीकर, ये सब है, विधानसभा का स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, इन लोगों के बारे संविधान के अंदर ना तो मेथड दे रखा है इलेक्शंस का या अपॉइंटमेंट का, ना ही टाइम लिमिट दे रखी है. ये सारी चीज़ें पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ी गई. पार्लियामेंट अपने रूल्स बना के इस डिसीजन पे आ सकता है कि किस बेसिस पे किसको क्या पदवी देनी है, और इलेक्शंस कब होंगे वो भी पार्लियामेंट ने पावर दे रखी है प्रेसिडेंट को, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने पावर दे रखी है गवर्नर को. ठीक है. सो द पावर हैज़ बीन एक्सरसाइज्ड एट द डिस्क्रेशन ऑफ द गवर्नर and no time limit has been given. So the question that is now standing before the Supreme Court in a public interest litigation, let me show you the comments made by the Supreme Court in this particular aspect. It's a very recent current affairs which are coming out over here. ठीक है, ये सब February 2023 के current affairs. ठीक है, just take a look at this particular part. Supreme Court issues notice to center on plea that no polls were held to posts of deputy speaker in parliament and 5 state assemblies. ठीक है, चलिए सुनिए इसको एक बार पढ़िए इस पर. And this is what basically I'm pointing out to as a current affair. You can see the date of this current affair is absolutely recent, February 13, 2023, in the jurisdiction of the current affairs for the polity paper. Okay. The Supreme Court on Monday asked the Union government to respond to a plea that no elections have been held to the posts of deputy speaker in parliament and 5 state legislative assemblies. A bench led by the Chief Justice of India, D.Y. Chandrachud, issued notices to the Union and requested the Attorney General of India to be present in court when the case comes up for hearing. Now, this is something that you can also remember just for a fact check information about your current affair. The 5 legislative assemblies which do not have a deputy speaker are Rajasthan, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Jharkhand and Uttarakhand. ठीक है, एक बार आप चाहें तो इसको नोट कर लीजिए. द 5 legislative assemblies which do not have a deputy speaker today are given as on the board: Rajasthan, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Jharkhand and Uttarakhand. Okay. Right. Now, let's read forward. The petition said that Article 93 हमने पढ़ा है स्पीकर के बारे में है, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर. आर्टिकल 178 है डेप्यूटी स्पीकर और स्पीकर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. Mandated the House of the People in Parliament, it said, to choose 2 of their members to the office of the speaker and deputy speaker when the posts fall vacant. Okay. Now, this is one part. Supreme Court later on had made certain observations in listening to this PIL. Take a look at this. This is about the disqualification under anti-defection. Sorry, so this is still the judgment which the Supreme Court is keeping under consideration. It has not brought about a judgment upon this. ये आप एक बार पढ़ सकते हैं, और डेप्यूटी स्पीकर का जो प्रोविज़न है आर्टिकल 93 उसको आप पढ़ सकते हैं. इससे आपके
प्रीलिम्स में अगर एक आधा क्वेश्चन कोई बनता है तो वी कैन टेक अ लुक एट दैट, अगेन पार्ट ऑफ व्हाट यू कैन कॉल द रेलेवेंस एनश्राइंड इन द करंट अफेयर्स। ठीक है, चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड। मनी बिल है, उसके बारे में कुछ बता के इस चीज को आगे बढ़ाता हूं। ठीक है, अब जैसे अगर हम देखें तो जो संविधान के अंदर आर्टिकल्स हैं, विच इज बेसिकली आर्टिकल्स 107 टू आर्टिकल 117, these are articles within the constitution which deal with what is known as the parliamentary procedure, मतलब प्रोसीजर कि पार्लियामेंट में किस किस तरह की चीज़ें आप किस किस तरह से करा सकते हो। तो जनरली ये 4 चीज़ों की बात करता है। ठीक है, पहली चीज़ की जो ये बात करता है आर्टिकल 107 से लेकर आर्टिकल 117, दैट इज ऑर्डिनरी बिल। अगर कोई सिंपल बिल है तो उसको पास करने का क्या तरीका होता है। ठीक है, ऑर्डिनरी बिल को पास करने का तरीका होता है सिर्फ बहुत सिंपल सा कि एन ऑर्डिनरी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन बोथ द हाउसेस, दोनों हाउसेस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है ऑर्डिनरी बिल को, राज्यसभा और लोकसभा में। जैसे फॉर एग्जांपल मनी बिल के साथ एक कंडीशन है कि उसे सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। फाइनेंशियल बिल के साथ भी एक कंडीशन है कि उसको सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। लेकिन जो ऑर्डिनरी बिल होते हैं, ऑर्डिनरी बिल की परिभाषा की जो मनी बिल और फाइनेंशियल बिल नहीं है वो ऑर्डिनरी बिल है। ऑर्डिनरी बिल्स अंडर आर्टिकल 107 कैन बी इंट्रोड्यूस इन बोथ द हाउसेस, ओके, एंड they have to be passed by both the houses. They have to be passed by both the houses. That's another important aspect. जैसे for example मनी बिल राज्यसभा पास करे चाहे ना करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। The powers of the राज्यसभा in money bills are only recommending powers. So even if it does not even if it gives recommendations and the recommendations are rejected by the Lok Sabha, then the Rajya Sabha cannot do anything about it. But not the same for ordinary bills. ठीक है, बट एक चीज़ है कि ordinary bills में अगर लोकसभा चाहे तो जॉइंट सिटिंग करा के राज्यसभा की बिल को ओवरराइड कर सकती है। लोकसभा कैन ओवरराइड द विल ऑफ द राज्यसभा थ्रू अ जॉइंट सिटिंग। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स अगर आप ऑर्डिनरी बिल के बारे में लिख देंगे तो आपको थोड़ा सा इसमें एमसीक्यू से डील करने का एक पॉइंट मिल जाएगा। दे कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन बोथ द हाउसेस, दे हैव टू बी पास्ड बाय बोथ द हाउसेस। उसमें कोई एक हाउस को आप बाईपास नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपको लोकसभा को राज्यसभा को बाईपास करना है ऑर्डिनरी बिल के लेवल पे, तो उसको जॉइंट सेटिंग करानी पड़ेगी। जॉइंट सेटिंग का जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 108, और आर्टिकल 108 जॉइंट सेटिंग में क्या होता है कि आपके पास 543 मेंबर होते हैं लोकसभा के और 250 मेंबर होते हैं राज्यसभा के, और आप उन दोनों को मिला के एक ग्रुप कर लेते हो। और अगर आपको इसमें से 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग लेना है तो जाहिर सी बात है कि लोकसभा के पास ज़्यादा लोग हैं, और अगर आप लोकसभा में हावी हो, राज्यसभा में हल्के हो, और राज्यसभा आपका बिल पास नहीं कर रही है, तो आप लोकसभा की मेजॉरिटी की स्ट्रेंथ को लेके राज्यसभा को जॉइंट सिटिंग में माइनॉरिटी बना के अपना बिल पास करा सकते हो जॉइंट सिटिंग में। तो जो एक तरीका है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव अ क्वेश्चन इन द प्रीलिम्स पेपर, व्हाट इज वन वे बाय विच the Lok Sabha can override the will of the Rajya Sabha in matters of ordinary legislations? The answer is a joint sitting. Okay, that's the point I want to make you a little focused upon with regard to giving any kind of a answer to the prelims questions in this sense. ठीक है, that's one part. Okay, second part, Article 109 and Article 110 deal with what is known as money bill. ठीक है, तो आर्टिकल 109 में दे रखा है प्रोसीजर ऑफ पासिंग अ मनी बिल, और जिसको कहते हैं स्पेशल प्रोसीजर ऑफ पासिंग अ मनी बिल। इस पर थोड़ा सा एक बार हल्का सा एक बुलेट पॉइंट्स का रिवीजन कर लेते हैं। आप किताब पढ़ के भी रिवीजन करोगे, इससे अच्छा आप बोर्ड देख के रिवीजन कर लो। स्पेशल प्रोसीजर फॉर पासिंग अ मनी बिल, स्पेशल प्रोसीजर फॉर पासिंग अ मनी बिल। ठीक है, मैं आपको बस पॉइंट में लिख के देता हूं, मैं बोलता जाऊंगा, साथ साथ में आप इसका रिवीजन कर लो।
क्योंकि प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगर मनी बिल अगर आपको पास करना है तो किस प्रोसीजर से कर सकते हो, ठीक है। बता देता हूँ उसका एक पॉइंट, कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, ठीक है। मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, मतलब इट कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द राज्यसभा। पॉइंट नंबर बी, इफ इट इज ट्रांसमिटेड टू द राज्यसभा, राज्यसभा कैन ओनली गिव recommendations on the bill. It cannot make amendments to the bill. It can give only recommendations on the bill. ठीक है। C, if the Rajya Sabha does not give recommendations in 14 days of its transmission, then it is deemed that the Rajya Sabha has passed the bill. ये वाली बात है ना, आपको समझ में आ रही है? अगर 14 दिन में उसने अगर अपनी रिकमेंडेशंस नहीं दी लोकसभा को वापस, तो ये मान के चला जाएगा कि राज्यसभा ने अपनी रिकमेंडेशंस नहीं देनी है, उनको बिल से कोई आपत्ति नहीं है। तो 14 दिन में अगर लोकसभा को बिल वापस नहीं मिलता तो लोकसभा मान के चलती है कि राज्यसभा ने बिल पास कर दिया है, ठीक है। जो रिकमेंडेशंस राज्यसभा से जाती हैं लोकसभा में, दे आर ऑफ ओनली परसुएसिव वैल्यू, मतलब उसकी कोई बाइंडिंग ऑब्लिगेशन नहीं होती है। दे आर ओनली ऑफ ए परसुएसिव वैल्यू, दे डोंट हैव अ बाइंडिंग ऑब्लिगेशन ऑन दिस पर्टिकुलर रिगार्ड। गेट द सेंस, ठीक है। तो लोकसभा चाहे तो उन रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट कर ले, चाहे उनको छोड़ दे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये जो इसमें पार्ट है कि जहां पर 1, 2, 3, 4 में आप लगातार देख रहे हैं कि लोकसभा डायरेक्टली और सिंगल हैंडेडली मनी बिल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। राज्यसभा की कोई भी पावर लोकसभा के सामने किसी हाल में टिक नहीं सकती है, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली वेयर द पॉइंट अबाउट द मनी बिल is becoming the special procedure which has to be passed by the Lok Sabha without giving any kind of a leeway to the Rajya Sabha. This is Article 109. अगर आप ये 4 पॉइंट याद कर लेंगे तो आपका आर्टिकल 109 में जो भी एस्पेक्ट है वो एक तरह से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। द स्पेशल प्रोसीजर फॉर पासिंग ऑफ द मनी बिल। उसके साथ ही हम देख लेते हैं आर्टिकल 110 में व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मनी बिल। मनी बिल की परिभाषा क्या है? अब मनी बिल की परिभाषा में ना मैं आपको बस एक बहुत सिंपल सा ट्रिक दूंगा जिससे कि आप समझ जाएंगे कि मनी बिल के बारे में क्या बात करते हैं। हाँ, ये जो प्रेसिडेंट का एसेंट का पॉइंट है, मैं भी आगे आऊँगा इस चीज़ पे। प्रेसिडेंट का एसेंट किस चीज़ पे हो सकता है, मनी बिल और फाइनेंशियल बिल, इन सब चीज़ों पे। दैट्स अ गुड पॉइंट रोशन, आई विल कम टू दैट। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मनी बिल? मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ ये समझने के लिए कि किसी भी बिल को मनी बिल कब कहा जाएगा। अगर आप गौर से देखें तो आर्टिकल 110 जिसमें डेफिनेशन दे रखी है मनी बिल की, और आर्टिकल 117 जिसमें डेफिनेशन दे रखी है फाइनेंशियल बिल की, वो ऑलमोस्ट सिमिलर, मतलब उनकी जो आर्टिकल की शब्दावली है इट्स मोर और लेस सिमिलर, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है उन दोनों आर्टिकल्स के अंदर, है ना। इसमें लिखा हुआ है फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस चैप्टर, ये आर्टिकल 110 है, डेफिनेशन ऑफ मनी बिल। For the purposes of this chapter, a bill shall be deemed to be a money bill if it contains provisions dealing with all or any of the following matters. इसका मतलब है कि क्या? मैं आपको बताता हूँ सिंपली मनी बिल होता क्या है। इसमें लोकसभा को इतनी एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर्स दे रखी हैं। अगर आप कोई काम अपने जीवन में सिर्फ पैसे के लिए करते हो, मतलब जैसे मान के चलिए कि आपने कोई नौकरी ढूंढी या आपको कोई मतलब एक प्रोजेक्ट करना है, और आपसे कोई पूछता है कि आप ये प्रोजेक्ट क्यों कर रहे हो, तो आपसे कोई कहता है कि आर यू डूइंग दिस प्रोजेक्ट फॉर फन, इज दिस प्रोजेक्ट एडिंग मीनिंग टू योर लाइफ, इफ दिस सम काइंड ऑफ अ पर्पस बिहाइंड फुलफिलिंग द एम्बिशंस ऑफ दिस प्रोजेक्ट, डज दिस प्रोजेक्ट मेक एनी इमोशनल सेंस टू यू। ठीक है, आप कहते हो, इसका उत्तर मान लीजिए आप देते हो कि मेरे पास इसको करने का कोई मोटिवेशन नहीं है, सिर्फ एक ही मोटिवेशन है, मुझे पैसा कमाना है। ठीक है, यू सी द पॉइंट। सो व्हेन अ गवर्नमेंट, लेट्स से फॉर एग्जांपल, आई विल गिव एन एग्जांपल ऑफ व्हाट अ मनी बिल इज। व्हेन द गवर्नमेंट says that, let's say, it wants to put a excise duty on alcohol. Okay, let's say put 10% excise duty on alcohol.
Now the question that is asked to the government is that why are you putting excise duty? Do you want to, let's say, deter the people from consuming alcohol? क्या आप लोगों के बीच में अल्कोहल को लेके एक वो लाना चाहते हो, मतलब छोड़ दें अल्कोहल, पैसा बहुत महंगा खर्च होता है अल्कोहल वगैरह देने में, तो आप एक सामाजिक बदलाव लाना चाहते हो, ठीक है? या फिर आप मान के चलो कि आप अल्कोहल के प्राइसेस को स्टेबलाइज करना चाहते हो, जिससे उस पर ड्यूटी लगा दी तो कुछ और है, मतलब क्या आपका ऑब्जेक्टिव है? तो अगर सरकार बोलती है देखो भाई मेरा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है एक्साइज ड्यूटी लगाने में, मुझे इस समय कोई इंटरेस्ट नहीं है लोगों की जीवन शैली में परिवर्तन लाने के लिए, आई डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन मेकिंग पीपल बेटर एट दिस पॉइंट, व्हाट आई वांट टू डू इज आई हैव a fiscal deficit in which I have to put on some money, and I am putting excise duty on alcohol only because I want some money. There is no other motivation behind it. Only when I am looking for something which is basically to draw money out of it. You see the point? So when, for example, the government makes a bill or makes an act only to draw money out of a certain thing, nothing else, or only to give money to someone, nothing else. जैसे फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स में या किसी और चीज़ में अब ये पूछा जाता है कि आप किसी व्यक्ति को पैसा देना चाहते हो सब्सिडीज़ के तौर पे, पर आप उसको पैसा क्यों देना चाहते हो? आप चाहते हो कि उससे उसका व्यवहार चेंज हो जाए, वो कंजम्पशन अच्छा कर ले, वो पढ़ाई लिखाई में खर्च करे, तो कोई बोलता है कि देखो वो सब उसका डिसीजन है, आपका डिसीजन नहीं है. इफ़ यू गिव अ पर्सन सम काइंड ऑफ अ सब्सिडी इन कैश, यू जस्ट गिव हिम द मनी. Right? Don't try to change his behavior. Don't try to make him invest in a particular thing. You give him the money and you trust his decision, whatever he wants to do with the money. तो अगर कोई एक्ट ऐसा बनता है जिसमें सरकार कैश लेके लोगों के हाथ में रखना चाहती है और फिर बोलती है कि तुमको जो करना है करो, खर्च करो, we have the faith in you that you will take the right decisions without putting any XYZ conditions कि आप सिर्फ राशन पे खर्च कर सकते हैं या फिर आप सिर्फ मतलब एजुकेशन पे खर्च कर सकते हैं. अगर ये पॉलिसी काम नहीं कर रही है तो आप सामने वाले के हाथ में सिर्फ पैसा रख दो. सो एनी एक्ट विच इज डन बाय द गवर्नमेंट, बाय द यूनियन पार्लियामेंट in terms of getting only money out of a certain thing and putting only money in the hands of certain people without any corruption, without any ulterior motive कि आप मतलब जैसे कि आपको इसमें से environmental clearance चाहिए या environmental clean चाहिए, climate change चाहिए, ये होगा तो वो भी हो जाएगा, ये सारे confusions के बिना बिल्कुल clearly certainly आपको सिर्फ एक चीज़ से पैसा निकालना है और या फिर किसी और चीज़ में पैसा डालना है. ये सारी बातें बात की है ना. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने डीजल व्हीकल्स पे एक ड्यूटी लगा दी कि 15 साल से पुरानी जो गाड़ियां हैं उनको इतना ड्यूटी देनी पड़ेगी, तो आप इसको मनी बिल नहीं कह सकते. हालांकि इसमें पैसे का आदान प्रदान है, देयर इज अ ट्रांजैक्शन ऑफ मनी विच इज हैपनिंग अंडर हियर, बट यू कैन नॉट कॉल दिस अ ट्रांजैक्शन बेस्ड ऑन ओनली ऑन मनी, बिकॉज वॉट यू आर इंटेंडिंग टू डू बाय द यूज ऑफ मनी इज टू चेंज द बिहेवियर ऑफ पीपल, राइट? So just because for example you have exposed people with a diesel vehicle of more than 15 years of age to a particular duty, right? What it will do is it will dissuade people from traveling in that diesel vehicle. So your objective is not to get money. In fact, you would want less and less duty to be collected because that indicates that more people are switching to better combustion engines, okay? But to dissuade them to use a particular thing, you are using money as a tool. Or for example, if you punish someone for smoking and you charge a penalty upon them, or spilling the road, or dirtying the streets, etc. You're not doing it for money, but you are using money as a means to achieve social ends. In a money bill, you are not achieving any social ends. Money is the end in itself. And that is why, for example, under Article 109, okay? Under Article 110, you see, for the purposes of this chapter, a bill shall be deemed to be a money bill if it contains only provisions dealing with any or all of the following matters. ठीक है? Imposition, abolition, remission, alteration or regulation of any tax. ठीक है? मतलब आपने कोई टैक्स लगाया और टैक्स लगाने के पीछे आपका कोई और मोटिवेशन नहीं है, सिर्फ टैक्स लगा के पैसे निकालना है. There is a term only which is written over here. That is the characteristic definition of what is a money bill. You see the point? When a government or a union parliament does anything only for getting money out of it. अब for example अगर हम चलेंगे आर्टिकल 117 में जहाँ पर फाइनेंशियल बिल की डेफिनेशन दे रखी है. Take a look at this. A bill
or amendment making provisions the matter specified in subclause A to F of clause 1 of article 10 shall not be introduced or moved except on the recommendation of president, and a bill making such provision shall not be introduced. Now basically what it says is that a bill or an amendment making provisions for any of the matters specified in आर्टिकल 110, तो मतलब इसका कहने का अर्थ है कि जो फाइनेंशियल बिल की जो डेफिनेशन है वो भी वही है जिसकी जो आइटम्स आर्टिकल 110 में दे रखे हैं. मतलब अगर मान लीजिए फाइनेंशियल बिल का मतलब होता है कि अगर आपने किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे ड्यूटी लगाई तो उसमें आपको कुछ पैसे का आदान प्रदान करना है, लेकिन उस ड्यूटी लगाने का जो ऑब्जेक्टिव हो वो पैसे का आदान प्रदान ही करना नहीं है, उसके अलावा भी कुछ आपको करना है, जैसे कि सोशल बिहेवियर करना है, इकोनॉमिक की स्टेबलाइजेशन करना है, कुछ और करना है, तो उस बिल को हम फाइनेंशियल बिल कहेंगे. तो यहाँ पर आप देखिए व्हाट इज रिटन ओवर हियर इज अ बिल और अमेंडमेंट मेकिंग प्रोविजन फॉर एनी ऑफ द मैटर्स, और ऊपर क्या लिखा है, ओनली मैटर्स स्पेसिफाइड इन आर्टिकल 1110 क्लॉज 1 क्लॉज A to F. ठीक है, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ द डिफरेंस बिटवीन अ मनी बिल एंड अ फाइनेंशियल बिल. यहां पर लिखा है आर्टिकल 101 में, फॉर द पर्पसेस ऑफ चैप्टर बिल शैल बी डीम टू बी अ मनी बिल इफ इट कंटेन्स ओनली प्रोविजंस डीलिंग विद ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स. उसमें लिखा है कंटेन्स प्रोविजंस डीलिंग विद ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स. ठीक है, you see the point. So this is basically what we find as a difference between a money bill and a financial bill. A financial bill is a bill which may be using money but as a means to an end. A money bill is a bill which is using money as an end in itself. The only thing that it is wanting is to make money transactions out of it, nothing more or nothing less. Okay, you see the point. Now in addition to this, let's take a look at some of the provisions which have to be given over here. दिस इज आर्टिकल 110 क्लॉज 3. तो आप समझ गए बेसिकली संविधान में जब मनी बिल को दे रखा है तो संविधान मनी बिल के लेवल पे क्या चीज एस्टैब्लिश करना चाहता है. यू सी द पॉइंट, व्हाट इज द गवर्नमेंट ट्राइंग टू क्रिएट एज एन एस्टैब्लिशमेंट इन टर्म्स ऑफ द मनी बिल. And what it wants to establish is that it wants to give the Lok Sabha, the people, the complete power to do whatever they want to make sure that they can do things only for the money of it. Right? राज्यसभा का उसमें इंटरफेरेंस संविधान ने पूरी तरह से हटा रखा है. अब ये डिसाइड करना कि कोई एक बिल मनी बिल है कि नहीं, ये तो खैर हमने देख लिया कि मनी बिल का जो टच स्टोन है वो क्या है ना. इससे आप एक तरह से बिल्कुल प्रॉपरली आप खुद समझ सकते हैं कि ये बिल मनी बिल है कि नहीं है. ठीक है, अब आप समझ लीजिए वो अलग बात है, लेकिन आर्टिकल 110 क्लॉज 3 में दे रखा है दैट इफ एनी क्वेश्चन अराइजेज एज टू वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट, द डिसीजन ऑफ द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल देयर ऑन शैल बी फाइनल. अगर कोई भी प्रश्न ऐसा आता है कि कोई बिल मनी बिल है कि नहीं, तो उसका जो डिसीजन होता है वो लोकसभा की स्पीकर का फाइनल होता है. उसके बीच में ज़्यादा हस्तक्षेप या ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाया जा सकता. हालांकि द कॉन्स्टिट्यूशन इज गिवन वेरी क्लियर conditions of a bill to be qualified as a money bill. But if any question arises whether a bill or a money bill is or not, the decision of the Speaker of the House shall be final. Okay, that's one point. Now, in relation to this point also is the question that can the court, a constitutional court, exercise judicial review upon the decision of the Speaker? Can a court exercise judicial review upon the decision of the speaker given under article 110 clause 3? And the answer to that question is yes. Okay, the recent answer to that question has been given in the KS Puttaswamy judgment only. Okay, in the Puttaswamy judgment, which is also known as the Aadhaar judgment, one of the questions which was dealt by the people sitting at the bench, the constitution bench of the Aadhaar Act, it said that it cannot be questioned that the judiciary has the power to review the decision of the speaker. But nonetheless, जब आधार एक्ट को पास किया गया था तो आधार में बेसिकली बिकॉज
it was supposed to be, what we are basically saying is that because Aadhaar was supposed to be a kind of an activity which was being done of exchanging some money. For example, what the argument in the Aadhaar Act was, that what Aadhaar will do is it will enable direct benefit transfer to beneficiaries, because you can link your Aadhaar account to your bank account, and identifying unique identification numbers will allow your bank account to be better be managed, and the what you can call the activities can be directly given out. The what you can call welfare scheme measures, etc., can be directly given out. Okay, so in this case, the Supreme Court said that the Speaker's decision to decide of it as a money bill is fine. We don't want to interfere into it, but we have the power to interfere into it. That is what the Supreme Court said. Okay, but we choose not to interfere into it. The Speaker shall decide whether it is a money bill or not. In the Aadhaar Act, the dissenting judgment was written by the Chief Justice of India, the current Chief Justice of India, D.Y. Chandrachud. He wrote the dissenting judgment in the Aadhaar Act, and he said that the Speaker's decision to pass the Aadhaar bill as a money bill is a fraud on the Constitution of India. Okay, that's the judgment that the Justice Chandrachud basically gave in the Aadhaar judgment. Now, in the PMLA also the same case applied. Prevention of money laundering has some amount of money into it. The Speaker of the Lok Sabha passed the amendment to the PMLA as a money bill, bypassing the Rajya Sabha under Article 109 of the Constitution. Okay. Now, the question which was before the Supreme Court was again the same question, that does the Supreme Court have the power to review the judgment of the Speaker? And Supreme Court said, yes, we have the power, but we choose not to exercise it. Okay, let the Parliament take its own procedure, etc., etc. Let's not interfere into it. And by and large, Supreme Court said it seems that the decision of the Speaker is correct, and therefore the Supreme Court also did not take consideration of the second ground of appeal which was made to challenge the constitutional validity of the PMLA, that whether the bill which has been passed as a money bill, the amendment to the PMLA, can be challenged on the basis of it not being a money bill and incorrectly identified so by the Speaker. The Supreme Court dismissed this argument and said that this is done by the Speaker, etc., etc. However, the question of what constitutes a money bill and the power of the Speaker with regard to the money bill has now been referred to a 7-judge bench of the Supreme Court. So, in the coming times, what you will see is the constitution of a 7-judge bench of the Supreme Court, which will take the final decision on what are the major powers which are given to the Speaker with regard to money bill, in what cases can the Supreme Court exercise judicial review. These kind of constitutional questions have been referred to a 7-judge constitution bench, and which the current Chief Justice of India, who himself wrote the dissenting judgment in the matter of K.S. Puttaswamy, saying that the passing of the Aadhaar Act as a money bill is a fraud on the Constitution, himself is responsible for creating this constitution bench. So, one can see a lot of fireworks in terms of contestation between the judiciary and the government with regard to the decision-making power upon the money bill. If the government's decision-making power, the union's government Speaker's decision-making power of the money bill is regulated or guidelined by the Supreme Court, it can lead to a closer contestation between the two already disturbed organs of the state in India, which is the state on one hand and the judiciary on the other hand, right? So, this concludes our discussion upon PMLA and the background of what is known as, what you can call the passing of the money bill and the positions of the money bill. Okay. Chale. Now, in relation to this, assent to bills is also an article. So, for example, let's say if I just draw a very simple structure of this, you have under Article 107 ordinary bills, right, which has to be introduced in the Rajya Sabha and have to be passed by the Rajya Sabha. Article 108, you have the provision of joint sitting by which the Rajya Sabha can be bypassed. Article 109, you have what is called the procedure for passing a money bill. Okay, if you can read these articles as a source of revision of your basic content. Okay. Article 110 is the definition of money bill, focusing upon the term only. Definition of money bill.
focusing upon the term only. Article 111 deals with the provisions of assent of the President to the bills. Assent of the President. Right. Article 112 deals with annual financial statement, which is the budget. Article 113 deals with demands for grants. Article 114 deals with appropriation bill. Article 115 deals with additional grants, and Article 116 deals with exceptional grants. I'm sure you must have covered in your own sense about how this particular movement happens within the procedure established by the Parliament. So just take a look at Article 111 to finish off this entire portion of revision. When a bill has been passed by the House of Parliament, it shall be presented to the President, and the President shall declare either that he assents to the bill or that he withholds assent therefrom. You know, for example, the powers of the President or the discretionary powers of the President are most acutely highlighted in Article 111 of the Constitution. This discretionary power of not granting assent to a bill is sometimes also known as a pocket veto. Okay, let me, for example, elaborate for you what a pocket veto means. Okay, a pocket veto is basically simply this. What is a pocket veto? It says basically, let's say, for example, if let's say the President has been given a bill which has been passed by the Parliament. Article 111 say that the President must give his assent before the bill can be passed. Now, what the President can do is that upon receiving the bill, let's say if he disagrees personally with the objectives of the bill or with something like that, he can sit upon the bill and not sign it endlessly. By this, what he can do is he can frustrate the purpose of the bill. You see the point? Now, this kind of a situation is what is referred to as pocket veto. Now, in this one specific thing remains, kind of significant, that a pocket veto is not exercised by the aid and advice of the Council of Ministers and the Prime Minister. It is exercised by the President as his own discretion upon a matter, which makes the President in India finally have a say in terms of legislative power. Right? It has happened. For example, Gyani Zail Singh has exercised pocket veto because he has found some legislations made by the Indira Gandhi government to be a little off the track. So what you can do is you can give him the bill to assent, and what he can do is he can sit upon the bill and not sign it, and by not signing it for some time, he can frustrate the objectives of the bill and therefore in a way veto the bill. That is a power given to the President under Article 111 of the Constitution, withholding without any time frame. Okay. Now, with regard to a money bill, provided that the President may, as soon as possible after the presentation to him of a bill for assent, return the bill if it is not a money bill to the Houses with a message requesting that they will reconsider the bill or any specified provisions therefrom, in particular, will consider the desirability of introducing any such amendments as he may recommend in his message, and when a bill is so returned, the Houses shall reconsider the bill accordingly. And if the bill is passed again by the Houses with or without amendment and presented to the President for assent, the President shall not withhold assent therefrom. Very simple, aspect of it. Basically, if a bill goes to the President, he can do three things: give assent, withhold assent, or return the bill for reconsideration. Now, mind you one thing, let's say if a President gets a bill which is passed by both the Houses of the Parliament, and if he withholds, let's say if he gets a what you can call a bill from both the Houses of the Parliament, and if he, let's say, returns the bill for the reconsideration of a Parliament, first of all, he cannot return a money bill. Money bill can only be subjected to two provisions: either it can be assented to, or it can be withheld in the pocket veto. It is actually possible for the President to withhold a money bill. Do you imagine? The pocket veto of the President applies also to the money bill. Okay. What the President cannot do with the money bill is return it to the Parliament. Okay. But for any other bill other than the money bill, so President has three exclusive choices. If he gives assent, he can't do anything else. If he returns, and when he returns for the reconsideration of the House may reconsider or may not reconsider and give the bill back to him. But upon the return of the bill from the House,
the president has to mandatorily give the assent. Neither can he withhold once he returns back the bill, once the House returns back the bill to the president, nor can the president return it back to the House for a kind of a, again reconsideration. And if he is withholding the bill, then he can sit upon the bill and give assent at a later date. Right? But one thing very important to remember with regard to the multiple choice questions in which this kind of a context can be turned around a little bit is that the president cannot return a money bill, and the president, once returned an ordinary bill, can neither return the ordinary bill again nor withhold the ordinary bill from giving an assent. This is also one addition over here in the Constitution Amendment Act under Article 368. The president shall necessarily give assent to a bill. Under Article 368 for a Constitution Amendment bill, the president can neither return the bill nor withhold the bill. So pocket veto does not apply for Article 368 Constitution Amendment Acts. If you can remember this, you can answer all questions with regard to the assent of the president. Okay. Now I think we are drawing to a close of the session. So if you have certain questions which I have missed out, you can start pasting them in the chat box. And if you have any more questions, maybe the chat has moved along without me taking a lot of questions. So if you have some questions, please make sure that you repeat them in the chat box and I can start addressing them, because we are moving towards the final points of the session. Please paste in your questions, lest I move on to the last points that I'm trying to discuss. If you have any questions, otherwise I have one or two topics. Okay, you want, okay, fine. Give me a list of things that you want to discuss. If I have the convenience of accessing these things, I can discuss of these things. Okay. So Kanti says that they want to discuss, Karan says discuss Office of Profit. Okay, okay. Anything else if you want me to discuss, I'll take it up very quickly from the prelims perspective, so that we can cover things which are possibly questions from the prelims examination perspective. Office of Profit is one thing. Anything else that you want me to cover, please put it out in the chat box. I can see it and I can take it up. Okay, Aditya has a question. Article 105 clause 2 and Article 122 seem exactly similar in meaning. Is there any difference between the two? What if an MP complains of the right of freedom of speech and expression to Supreme Court? No, it's not similar. Article 105 clause 2 says that the difference between the two is the difference between substantive and procedural law. Okay, the substantive law of let's say, for example, if a vote has been made by a member of parliament by using a logic which is not scientific, okay, then the Supreme Court or High Court can interfere into the activities of the Parliament, except that it is saved from doing so by the application of Article 105 clause 2. This is a substantive activity of the parliamentary procedure, the parliamentary activity of the reason by which you are voting. In Article 122, what you are saying is that the court cannot interfere in the procedure of the Parliament. So first of all, Article 105 clause 2 saves a member of Parliament from the court. Article 122 saves the Parliament as a whole and the procedure by which it functions from the court. You see the point? That's one important distinction which in a way clearly identifies the two. यहाँ पर एक member of parliament की अपनी खुद की करने की, जैसे for example let me say this, अगर कोई member of parliament बोलता है सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के अंदर कि इस व्यक्ति ने 50,000 करोड़ का घोटाला किया है ना, और अब मान के चलिए कि वो 50,000 करोड़ नहीं है, असल में 10,000 करोड़ है,
ठीक है। अब मान के चलिए कि सुप्रीम कोर्ट के पास कोई चला गया डेफेमेशन का केस लेके इसके ऊपर कि आप इस पे डेफेमेशन का केस लगाओ, इसने 10,000 को 50,000 करोड़ बैठा है, तो सुप्रीम कोर्ट बोल देगा आर्टिकल 105 तो दिखा के कि इस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो पावर है इसके बीच में हस्तक्षेप नहीं कर सकता हूं, क्योंकि आर्टिकल 105 क्लॉज 2 के हाथ मेरे हाथ बंधे हुए हैं। तो आपने कुछ अगर बोला है उससे आपको डेफेमेशन नहीं मिल सकता है। आर्टिकल 122 व्हाट आर्टिकल 122 सेज इज दैट, मान के चलिए कि अगर पार्लियामेंट की किसी, जैसे मान लीजिए पार्लियामेंट ने किसी सुप्रीम कोर्ट के जज का इंपीचमेंट किया, और मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के जज के इंपीचमेंट में पार्लियामेंट ने प्रॉपरली हर एविडेंस का बहुत ध्यान से बारीकी से फॉरेंसिक एग्जामिनेशन नहीं किया जैसे कोर्ट करते हैं, है ना। अब मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ पे गुस्सा हो गया कि आपने बिना पूरी एविडेंस लिए सुप्रीम कोर्ट के जज को इंपीच कर दिया। अब इस पोजीशन में अगर सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट को आके शिक्षा देता है कि तुम्हारा जो फोरेंसिक प्रोसीजर है वो बिल्कुल फ्लॉड है, तो पार्लियामेंट के पास आर्टिकल 122 के अंदर इम्यूनिटी है दैट सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट को चीज़ों करने की शिक्षा ना दे। मतलब किस तरह से प्रोसीजर, किस मेथड से आप साइंटिफिक एनालिसिस वगैरह करोगे वो सुप्रीम कोर्ट अपने तक ही रखे। पार्लियामेंट को आर्टिकल 122 में दे रखा है कि द सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट इंटरफेयर इनटू द एक्टिविटीज ऑफ पार्लियामेंट मियरली ऑन द ग्राउंड दैट योर प्रोसीजर ऑफ डूइंग समथिंग इज इनकरेक्ट, कि आपने बारीकी से एक एक चीज़ नहीं देखी, जैसे हम कोर्ट में देखते हैं आपने ऐसी इंपीचमेंट कर दिया। इस चीज़ में पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट की एक्टिविटीज से इम्यूनिटी मिलेगी। दिस इज अ वेरी स्टेबल एंड अ सस्टेनेबल डिस्टिंक्शन बिटवीन द पार्लियामेंट एंड द सुप्रीम कोर्ट इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल 105 एंड आर्टिकल 122। ओके, just give me 1 second, I'll get the questions properly on a pad, please. Whatever we can discuss, we'll discuss in the time remaining for us. Okay, right, so I have a bunch of things that I can explain. Okay, Aditya, I think I answered the question. If it feels that it's a good question, but maybe I was able to address some of your concerns here. ठीक है. Okay. No, Sandeep, 10th schedule में president cannot decide the questions on qualifications of members of parliament. It is the speaker who decides it. President decides it under article 105. Under article 102. Any kind of a disqualification which is done under article 102, which is with regard to article 102 clause 1 clause E, which is about the representation of People's Act. It's a good point. I'll just highlight this. Under disqualifications, let me just give you a sense of this. It's a good point that you've raised. Under disqualification, I'll just make a kind of a diagram to get you a sense of what I'm trying to say. Under disqualification, by the virtue of article 102, you have disqualification made under article 102 clause 1 clause E, which is Representation of People's Act 1951, and you have disqualification made under article 102 clause 2, which is the 10th schedule. Okay, do you hear me? Now, under this, the final authority to decide the question under this is the president plus the speaker. President plus the election commission. Okay, the final authority to decide the matter is the president plus the election commission. Okay, and in this, the final authority
to decide in anti-defection is the speaker plus what you can call the final authority to decide is speaker plus the judicial review which can be exercised by the Supreme Court. This is a way that you can probably chart it out to answer the question, right? ठीक है. I'll deal with a little bit of what is known as the Lok Sabha and Rajya Sabha Secretariat. I think that's a part that was also important in the current affairs recently. Okay, Secretariat of the Parliament, Article 90 of the Constitution.